Now, it's a good point, right? When you are learning either public cloud or private cloud, you should be aware of right, some of this terminology, like when we talk about infrastructure as a service, okay? Platform as a service, software as a service, and a few more terminologies which are coined right over them. We'll discuss about them, and then we will jump to S3 topic. So I have started recording. So say the very first layer that everyone talks or discuss about is infrastructure as a service. So when we say infrastructure, okay, what you mean by infrastructure? Anyone? What is infrastructure in terms of say? I just give you a hint when It uh, is, yeah, go ahead. yeah, yeah, it is like architecture. No, architecture is different thing. Architecture would consist, right? Architecture is of a solution for an application, or right, something right that you are going to build, right? It may right contain some infrastructure definition inside it, right? Some application specific definition inside it. That is architecture. Okay, so architecture is different thing. And infrastructure means I can explain in can I explain in another way? Yes, sure. So suppose we are going to open a restaurant. Suppose okay. So at that time we need some what is it? Suppose we are going to open any showroom. So at that time we need some furniture there. Yeah. So you are right, right? When we are right creating a building, right, we need right plane and everything, right, which come right furniture or whatever stuff, right, which comes as right infrastructure, which is required to right have a building, right, and then people will start living in it, right, and using it. That makes sense, complete sense, right? But in terms of right this information technology aspect, when we talk about infrastructure, these are basic building blocks like your hardwares, right? For example, your compute machines, right, your networks, right? These are all what, these are all through on which your application would be learning will actually rate will run. So this kind of components are known as what, your infrastructure. So when I say right I need a load balancer, when I say I need right network or VPC, when I say I need a hardware resource of this and this configuration, right, then I'm talking about what, I'm talking about infrastructure as a and I'm providing this right infrastructure, I'm setting them up and right giving a solution so that anyone can go and right start using those services. So typical example is, can you give me of right any right provider which gives you infrastructure as a service? And you should answer me this. AWS, AWS, right? Azure, Azure. GCP, these are right very good example of right even OpenStack, right? These are very good example of what some of the Infra, vendors, right, which yes. are providing you infrastructure as a service. Now, say you have infrastructure, now you want to manage it. Okay, you want to manage this right infrastructure uh, and want to do some right development using all those infrastructure. Okay, so I should come say I would start and right managing right whatever resources I have created, I start right managing them, and I can start my right development over them. Typical example, I use some of the infrastructure, like I have say uh, clusters of machines, right, in which I have installed right many microservices component, or I can say my module which are right working in a microservices architecture. So I have all this defined, right, and now I want to manage them, right, I want right that they should work fine, right? So and anyone who wants to right start doing some activity, right, he should be able to start and deploy his module, right, and start managing it. So in such case I need to build a platform over it, right? Our infrastructure, I will need what, a platform to be built upon. So जैसे कि इसका example anyone have any one example that they are thinking could be a platform as a service? For operating system, They will fall under infrastructure.
like softwares like Mailchimp or this kind of who provides marketing services. So when you say Mailchimp, can you see what? Can you say, because I have not heard about it? So what they basically do? Can you just give? They let us send us emails and tracking out. It's a digital marketing tool. Okay, so then it will call us, right, software as a service, right? So Dropbox and all. Dropbox is again a software as a service. So a Okay. typical example, right, for platform as a service, right, is Kubernetes. Okay. Oh yeah, that's Yeah. really So this is one typical example of Kubernetes, or you can say, right, Beanstalk, Apache. Beanstalk, Apache, right? These are the various things, right? You can say, which can, right, provide you how you can, right, utilize your application or set up your application. So, for example, when I say Beanstalk, which is a compute, but this compute is not a mere a compute. It is what you say that I want all this softwares set up in my, right, instance, right? For example, I'm a web developer and I need Node, I need React, right? I need PHP, I need, right, different other, right, Java, right? And I need a machine already set up with all this, right, software's utility in it. So if I got something, right, like this already set up, so I have to do what? I have to come over that machine and start my development. I'm not worried about my infrastructure, right? Already is set. I'm just start it utilizing it to start doing my development work or whatever, right? I want to, right, build over whatever infrastructure is given to me. You got my point? Sir, can we consider AMI as a pass? No, AMI is just an image, right? And this image is used, right, by operating system to by a hardware, right, to give you an operating system. So mostly it is part as a configuration, right, for infrastructure to, right, work on. I will treat AMI like that. Okay. Yeah, okay. Okay. So uh, basically, right, when I say right, see, maybe your point is in that line that you are baking up an AMI, right, with all the utilities, right, that is required, right, pre-baking, Correct. in which, Yes, so yes. you're thinking in that aspect, but still, right, it is not launched, right, it is just an, right, what, compressed, right, you can say utility, right, when it is executed, right, run, right, over an hardware, then it gives you an operating system, then you will start working on it, right? So to do that activity, to run, right, that particular, right, image, and, right, let them work as a container, and you are able to manage them, right, if you're giving that solution, right, then I will, right, take it as a platform as a service. Okay. Kubernetes does what? You does what for Kubernetes? You set up something, right? You have some master component, you have some, right, worker components, and if they are all installed, right, in your infrastructure, now you are capable of supporting any microservices architecture deployment, or any application, right, which need to be deployed, right, a containerized application which need to be deployed and managed. Now you can do using, right, Kubernetes. You got my point now? Yes or no? Or still you have caution? You can right, clarify. Silence for me would be yes, guys. Okay. Yes, cleared. Yeah. So let me give you another example. Okay. Now I had created one engine. Okay. When I say engine, that engine has capability of giving you, you can say something, over which you can build and start, right, doing some kind of, uh, we can say, marketing, or, right, I would say, in a way, some campaign, you can start some campaign, right, in which you can do a certain kind of marketing of your product, or advertising, basically, I mean to say, rather than marketing, right? So I'm giving you a engine which is capable, make you capable of raising campaigns, and start, right, creating campaigns for advertising, and that will yield into, right, some benefits later. But yes, this is just an engine. Our engine, you need to develop everything, right? How you are going to write some software, so that
you can do advertising and create campaign, or you can create certain tool to do that. Now if I'm writing this kind of stuff, which I can provide to anyone, so he has engine now. Our engine, he start doing his development or creating his application. So obviously that is also falls under what? Platform as a service. Okay. So have you heard about Fastly, guys? No. So explore it, No. and then you will understand, right? Search Fastly, what Fastly does, and all that. Okay. Okay. Now hope you have some clear understanding of platform as a service. Okay. Now the third one, which is popularly known as what? Software as a service. So I know most of you would be able to answer it. Can anyone give me some good examples of software as a service? Outlook. Great. So obviously, Dropbox. uh, Dropbox, any mailing, Gmail, right, or any certain services, which can be provided. Mute yourself. So which can be provided use user as a service, a software as a service, then I will treat that as a software as a service. And it is merely not, it should not be, we always think every public offering of software is software as a service. Even I can create my own private cloud, and our private cloud I can create a software and sell it to users, and user can use it as a service. Then also it amounts to software as a service. So never directly make this services that you are talking about binded to only public cloud or AWS. It is not like that. You have to be very clear about it. Okay. So now, offer this software as a service. You might will see or which is happening, and we somewhere we talked about using platform, we are going to manage some stuff. And there is a terminology which is you will hear, or basically it is coined already, which is known as container as a service. So what does it mean? Anyone? So if I write an application which is my software, and it is containerized, and that containerized application is serving you, then I will term it as what? Container as a service. Is this clear? Yeah. It's straightforward. Uh, Nothing, can you explain more about CAS yes. container? For example, I have written a web application, and I was how I was launching that web application, was not as a microservice architecture. So it was running in one of my machine, in which I have installed either Glassfish or Apache Tomcat, or you can say any containerized way of running application. But this container is a different web container. It is not a container which I am terminology using for Docker. So if I'm running my application in a machine after installing Apache, and over that I am deploying my web application, and users are using it, then that is software as a service. Now, say for example, same software as a service component, in which I have different modules, which has front end, back end, everything, and I turned all those front end, back end, and Dockerized it or containerized them, and now, those containers, which are running, and I'm using my application using those containers, then I will say that as a container as a service. Is it clear now? Yes. Yes, it is clear, but can you define content as a service as a it Okay. may be a part of template? Okay, okay. For example, if I say you to install an application in a machine, what you will do? I will download that software and install. And install and start using in that machine. Yeah. Now, I would say, I want it should not run and run in one server. I want to run inside a container. So what you will do? Same application which you have installed and used in a machine while downloading and deploying. So now I want that should run as a container. Then what you should Then I will download that container.
First you will have you should have something like runtime like Docker or right Yeah, yeah, Linux D, right? First you will set up in your machine, right? And then you will do what? You will use one container and install your application inside that container, right? Now your application is not running on your main server, it is running inside what? A container, right? yeah, And then if you are using that service which is running inside container, then we will call it what? Container as a service, correct? yeah, Deepak, yes. So there is no much difference, but yes, in terms of right how you are using it, that is the main thing. Okay. Uh, Uh, Deepak, Uh, what are the conditions where we can use cache so or SAS? see, conditions. I would not say there are conditions. It depends, right? Your organization approach toward right developing an application. So earlier we do what kind monolithic right adaptation was there, right? So we right procure a very right server class machine, and in same machine we have all the right application component installed mostly, right? For example, database is there, okay, your front end is running there, back end is running there, right? And similarly, right, to make it high available, you have two or three servers, and whenever a request is high, you tune it, or right, you create one more server and right distribute your traffic around that. And that was a typical monolithic architecture. Now people are moving right from monolithic to kind of, you can say, microservices architecture. Whenever we will talk about right we are working on a microservices architecture, you will see the approach would be right using containers, right? So each and every module right needs what? A different entity, or you can say it should run in isolation. I can do that using having multiple machine also, right? So जहाँ एक ही server में सब कुछ install था, मैंने चार server लिए, हर चार server में अलग अलग. But it is not an optimized use of your hardware, right? So you are actually increasing the cost, right, and maintenance, and your footprint of hardware is also increasing. In such case, right, my organization might decide, right, I know I want to cut my cost of right infrastructure. So what I should do, I should approach a microservices right architecture which can be right run as a container, which can be maintained right using some right platform as a service like Kubernetes. You got my point? Sir, for container as a service, the operating system would be different. No, Like what you said. it's not required, because if you see Docker, right, Docker is Yes. platform independent. It can Okay. run on Mac, it can run on Windows, it can run on any variant of Unix operating system. Yes. Yes. Okay, so basically it is what? It is an engine. Docker is what? Yes. And kind of an engine, right, that you install in your operating system, which is able to talk with the hardware, right, or you can say interact with kernel, right, to consume resources and do everything, right? Okay. It is something which is right earlier but has been marketed, or you can say in some way democratized, right, in a better way, right, in a useful way, or a layman terms, right? Anyone can use it, right? It becomes user friendly. Earlier, we all were using, right, in even in 1990s, right, when we have Solaris. So we are creating right jailed environment, right? Chroot and all those commands, right, are there, which are nothing but right creating an isolated operating system within an operating system. Okay, so it is like a virtualization of OS. So this is what. Okay, so So, clear about container as a service. Basically, for example, I told you, right, I will have an application, I will dockerize it, right, or containerize it, I will make it run inside container, right, and this container would be running in one of my server, right, and in my server I can have multiple containers running, right, and a cluster of nodes are there. In cluster of node, right, our application of my container is also running for high availability and all that. So it will reduce, right, what my footprints, and right in terms of vertical and you can say horizontal scaling, right, this cast could or you can say container as a service is very useful. And therefore companies are migrating toward that approach, and therefore you are seeing a lot of requirement in terms of DevOps. Sometimes they ask, right, that you have a Kubernetes understanding or not, right, have you used Docker or not. That is the reason, right, the organizations are moving to. Okay. Deepak, one question here. Yes.
Nikhil? In CAAS, we are bundling software in one container, right? So if suppose we have application which is based on database, okay, some sort of database. In that case, how would we manage the data? Like each container will have the data as well, or how is it? No, it's a very good question. See, we can containerize database for sure, but the data should not be there in container. The main goal of using you can say a container is it should be very lightweight, right? So your download time while doing deployment, should not be high. If you keep your database data inside it, obviously how it will be quite a lot to pull your image. Basically, it will take a lot of time to pull your image. True or not? Correct. And Yeah. the data itself So is also in several GBs. yes. So what would be the way? So Docker have called volume mapping, right? Docker have any container would have that feature where you can do a volume sharing. So in that case, what you can do, you can have your dumps maintained in some of your, you can say, systems, or where NFS or wherever in your volume you can pull those queries, and at the time of launching an application, you can run those dump and insert your data. Activity can be done separately, but it should not be Dockerized. Your data should not be Dockerized. Got Okay, my the point? path references we can provide, but we Yes. can't provide the actual data. So I will not write Dockerize with data. Okay. My sole purpose of having using container will be broken actually in a way. So Okay. you will see there are Dockerized images for MySQL, everything, but they are what? They are just giving you a already installed a database container. Now inserting, running your queries inside them, would need what? So how you are inserting your data from outside, right? And remember, every time, when you insert data, and you're using that in container, so it should be referenced, from a different path. Okay. And once it is launched in a server, for example, मैंने एक microservices container बनाया और मैंने उसका validation किया, सब कुछ किया, right? अपने test environment में. लेकिन जब भी मैं application को push भी करूँगा production पे, तो मैं सिर्फ a container which will set up my MySQL वो container डालूंगा, और मेरा जो data reference रहेगा वो production का रहेगा, उसमें मैं point करूँगा, map करूँगा कि यहाँ पे तुम्हारा data है, ये तुम्हारा जो भी रेफरेंस फाइल है, इस जगह से तुम जब भी इंटरेक्ट करोगे तो इस जगह से आप रेफर करोगे. ओके. जो भी इसका Okay. स्कीमा एंड एवरीथिंग जो भी रहेगा, आपने जो डम्प्स ले रखा है. Got my point, right? Yes. And what all databases are supported? Oracle, SQL, like So that. you can go to docker.com. Hmm. There is a search button over at the top. Okay. And type Oracle, Redis, any you can say that everything would be Dockerized. Everyone would have Dockerized it. It will. So one last question: This the requirement suits for RDBMS, or is it for structured or non-structured only? So mainly for non-structured, but there are cases people want RDBMS. They are also there. They are also present. It's not like that only for not, but microservices architecture, or serverless, always go for NoSQL kind of databases approach. Okay, thank you, Deepak. Yeah. Okay, now after discussing a lot of CAS, there is one more. Okay, and that is what? Can anyone guess? क्या हो सकता है? Can you repeat the question? I just. So just like software as a service, container as a service, there is one more terminology which is coined. But basically, remember, everyone will talk about IaaS, PaaS, and SaaS. But CaaS and this, which I am going to discuss now, are coined and generally used, just like SaaS, PaaS, and IaaS. So what would it be? Any guesses? It is? Mass? No, monitoring as a service is not. Function as a service. Okay, function. Yeah.
So function as a service basically is used, right, when you are using serverless right application, right? And in this case, right, you are not managing hardware, right, or any platform, right? So you are writing your code or software and just providing your code, right, to the provider. That is what, right? And this function is serving you what you want. If you're giving such kind of solution, right, which is serverless in nature, right? When I say serverless, it doesn't mean this function doesn't need a server to run. Serverless is not serverless actually, right? Or serverless doesn't mean without server. Serverless means I'm not managing that, right? I'm not going to pay for server. I'm going to pay for execution of my function. And it is the responsibility, right, of you can say a provider like AWS, Azure, where I'm just saying that this is my function and this invocation would happen, right, when I will trigger that right function. So it should get executed and give me result. And how it is getting executed, how much of memory it is requiring, right, right, how you're going to manage or provide, right, you can say in terms of a lot of hits are coming, so how you are going to utilize your hardware, it is the responsibility of the provider, not me. Got my point? Basically, it is independent of server. Yes. So I will not manage server. For example, I am writing an right serverless application. I choose one of the service called Lambda, right, in which I will write my function. Okay, and I will right hit my function some way, right, using some triggers, right, and I will get my result. So you see, right, I didn't right raise an server somewhere. I just submitted what my code, and it is AWS who will manage, right, for me where you want to execute. He will take that function. He will need some space where he want to right run this function and get result. That is the responsibility of AWS. So for me, I am using a serverless right Okay. service. So this is known as right functional service if you are mainly working on a right serverless uh, right architecture or creating an application which is right serverless. I hope this all terminologies are now clear. And remember the models which we have right in AWS are three types. One is what completely on cloud, that is what public cloud. Okay, just like if your entire company right or entire product of your company right is right using one of right public cloud where you are so you are totally on what public cloud, your everything, your data, your servers, everything right lies in what right public cloud offering, maybe right GCP, AWS, IBM cloud, right? There are many right public offering clouds. Now second would be right a private cloud. Private cloud means you have your own data center, or you are using some data center, leased some data center in which you have your rack servers and you are managing it. You are managing your infrastructure, you are managing your platform, you are managing your software, right? You are managing your right containers, you are managing your, so that is completely owned by you, right? You are a owner of that data center and you are managing it, right? So no third party right is managing it, your company itself right is managing. Then you're using what a private cloud. Generally we call it what on premises. Okay, and the third model is what hybrid. So hybrid will use both mix of what private and public cloud. So most of banking companies do that. The reason behind right, they don't want to expose their data right on the public. So all their right important data aspects right are taken care in what on-prem or their right private setup, on-prem setup, and application right entities are running there basically right in. So they want right some of the entities not be on cloud. So that's the reason they approach a hybrid model, right? Is this clear? Yes. Okay. Deepak, one more thing, like for hybrid thing, Mhm. and private. So, can we use AWS as a hybrid thing or other So, service? when I say a hybrid, I told you right, it is a mix of public and private cloud. So it is a public, right, and private would be my own data center. If I right, so I am having right both of them, right, and I have a you can say some connectivity between my on-prem to AWS, and I'm using certain firewalls, right, to see right what Okay. data should go and what should.
not, right? In that way, right, if I'm defining, right, I'm using a hybrid. Okay, but Okay, so now let's move to S3. So first of all, when I talk about S3, so S3 is one of what kind of services? Yes. Not don't choose this terminology IAS pass. I'm just talking in terms of domain. It falls in which domain of service? For example, EC2 is a compute. storage. Storage. Yeah. So S3 is storage. Mhm. Storage. Therefore, if you break down S3, right, it is 3S, right? Simple storage service, right? They have term. So this is one of the right first few services, right, that AWS has given. Now the main fundamental here and how it is different, right, than any other storage. Can you think of, right? So, for example, I am storing my data in my hard disk, right? So how it is getting stored? How it is getting stored in my hard disk, my data, In or your terms of operating system? packets, In hard disk, the data will be stored in the form of blocks. Blocks, right? This is what I want to hear, right? So obviously every operating system had a predefined block size, right? So block size आपका 64 MB का हो सकता है, राइट? 1024 MB का हो सकता है. तो अब जब आप कोई फाइल ओपन करते हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे और जब उस पर आप लिखना शुरू करते हो, right? Obviously it is getting written, right, in your hardware basically, but it is written as per blocks. First you fill right that block and then write data, right, whatever remaining writing you are doing. For मैंने एक 64 MB का फाइल लिखा, अब 64 MB के बाद जैसे ही मैं और कंटेंट लिखने गया तो now I am using two blocks, right, in my hard disk basically, right? So in that way you fill your blocks and these blocks are responsible for your IO operations also. For example, अगर मैंने 4 GB का डाटा लिखा है और मेरा 64 MB मेरा ब्लॉक साइज है, तो how many blocks I have utilized? 4 GB divided by 64 MB. True. So maybe write n number of blocks. So say I assume, right, say it is around 2000 blocks. Now if I have to do a read operation, I have to run how many blocks? 2000 blocks. True or not? Yes. Right? yes. If my block size is high, so obviously I have less number of blocks, so I have to read how many? Less number of blocks. So obviously this says, right, when your read operation or write operation are higher, when your seek operation are higher. So seek operation is something like you're searching, and if block size is bigger, obviously your seek time would be higher. But if your block size is smaller, right, it will fastly able to write search because it has to read less, right, or search less, right, in right each block because data is less. So obviously there are, right, pros and cons in terms of, right, your block size. And in big data world, right, we should have an optimum block size when we talk about. But yes, at the entirety we come to know that we are storing our data and accessing data using what? Our block address, or you can say in this there are addresses which are saved as blocks, and from that year we are actually doing read write operation. But in case of S3 it is happening through what? It is a object basis, right? An object is stored in a key, the key value way, right? So we treat, right, that we are actually not storing right in block, we are storing thing as an object, and this object are stored in some, right, key thing, key, or which is a reference, बोलते हैं ना hashing वाला जो फंडा है, right, की वैल्यू पेयर. तो उस बेस में उस वे में स्टोर्ड है. फॉर एग्जांपल मैंने एक बकेट क्रिएट किया, तो बकेट क्या है? मेरा बकेट मेरा एक्चुअल की है, ओके. और उस की में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? मेरा कोई भी फाइल, कोई इमेज फाइल, राइट, कोई वीडियो, वट एवर आई एम शेयरिंग, राइट. सो दैट वीडियो फाइल और image file or a regular file is treated as an object which is stored in a key, which could be my bucket, or bucket also contains subfolders, so those are also known as what? Key. तो अगर इसको देखा जाए तो it is very similar like, right, so in bucket, तो एक बकेट है, हम उसको बकेट बोलते हैं, एक राइट की को. तो इस बकेट को ट्रीट कर सकते हो, एक की है, और उस की में मैंने कोई फाइल डाली, फाइल डॉट टीएक्सटी, तो वो मेरे लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. एक ये हुआ. अभी क्या है? मैंने एक बकेट बनाया, राइट. सो एबीसी मेरा बकेट है, ठीक है. दिस इज माय बकेट. इस बकेट में मैंने एक फोल्डर बनाया.
सो फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ XYZ, ठीक है, ये मेरा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज फाइल डाली है, राइट। सो मेरा फाइल नेम है image.png, ठीक है। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट वुड बी द की एंड व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्ट? Object will be image. So image.png is an object, and what is key? XYZ. XYZ. The So folder. key would be combination of your bucket and folder. So this entire thing, I will keep it in big bracket. So this entire thing, right, from my bucket till folder in which it is stored, this will be treated as what? Okay, ये हमारा क्या हो जाएगा? की होगा, और जो इमेज है वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। सो ऑब्वियसली जब मुझे अगर ऑब्जेक्ट फेच करना है तो मुझे पूरा कौन सा की एड्रेस देना पड़ेगा? वो पूरा पाथ देना पड़ेगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। ट्रू? Yes. सो यू हैव टू think like that, right? So जैसे YAML definition है, YAML क्या होता है? की वैल्यू पेयरिंग पे डिफाइन रहता है, there would be key and key would have value. Similarly here also, to retrieve an object I should have right a value of key, or you can say I should have the address as a key, right, where it is stored, and then only I can fetch my right object. Okay, this is very basic understanding. Now there are fundamental right no, you can say kind of a know-how should be there. First of all, S3 is what? A global service. S3 is what? A global service. Yes or no? Yes. Right. Yes. When it S3. is hi, when it is a global service, what does it mean? That my It- bucket name should be what? Unique. Unique. Yes. ना अगर मैं अगर कोई बकेट बना रहा हूँ और सेम नाम का कोई बकेट बनाएगा और ग्लोबल है, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट हो गया ना, सेम नाम का नहीं होना चाहिए बकेट, Unique. या तो योर बकेट नेम Yes. शुड बी यूनिक. But despite one thing I would say, right, it's so it though it is global, but I can associate this global right bucket name with a Region. reason. Region. Reason क्या है इसके पीछे? बकेट को रीजन से एसोसिएट करने के पीछे रीजन क्या है? You can have the bucket in region wherever you want for the logs or to dump the log. वो तो मैं अगर मान लो मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, और मैंने बकेट क्रिएट किया और यूएस ईस्ट के साथ उसको एसोसिएट कर दिया, राइट, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा है रीजन के साथ एसोसिएट करने का? एक्सेसिबिलिटी, राइट, Local accessibility. राइट. Yes. तो लेटेंसी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने नियरेस्ट रीजन पे किया है. दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड, राइट, हैविंग दिस एसोसिएशन. ओके, ओके. नाउ we now know about, right, this uniqueness and also, right, why we can associate with reason. Now there's another thing which I would say, right, in terms of naming convention, right, it should be right not start with number, and also, right, while creating S3 bucket you will get that definition कि underscore dash क्या use करना, क्या क्या special character use करने चाहिए, क्या नहीं कर सकते हो, तो वो चीजें वहाँ पे आपको mention होंगी, तो you have to follow those guidelines. Okay, that is very important. दूसरा, the maximum length, right, should not go more than 63 characters. Bucket name, right, 63 characters के ऊपर support नहीं करता है. And in organization, while, right, creating those bucket, you have to go through some special naming convention to identify, right. तो हर organization का अपना naming convention अपना use होता है, तो you have to make sure that your naming convention should not exceed, right, 63 character, else you will get an error. Okay. Another thing, right, in terms of have you seen S3 used as code versioning tool like Git और CVS, right, जो हमारा code versioning है उसकी तरह हम S3 को use कर सकते हैं? Yes or no? Yes. Distributive रहेगा तो use कर सकते हैं जो. So see, I'm not generally, sure. generally it yes, please, Sonia, yeah, go ahead. अगर public access रहेगा bucket के लिए तो we can use upload or. So generally, if you see, right, many organization do use, right, it as a, right,
placing their code, right, and everything, right, in terms of serverless application. Sometimes they, right, create some web pages, right, and right, those codes are, right, are placed. The reason behind doing it, though it is not, I'm using like that, but it is not a code versioning tool. First of all, you have to understand that it is not a code versioning tool. Only reason behind using it, that it has a feature called versioning. Okay, your objects can be what? Versioned. For example, I had created a file and I have written a content ABC inside it, and I uploaded in S3 bucket, and my versioning is enabled. So I will get a version ID for that file when I upload it. Next time, if I made a change in the same file and uploaded the same file in the same, right, key location, so what will happen? New version. It will not overwrite basically in a way, right? But it will upload that file, right, and with a new version ID, and you are having an older version, right, file also there, right, maintained by S3. You got this point? Yes. Okay, so this is where, right, you can utilize, right, in certain situations, or you can certain development activities, right, and use as a, right, code versioning tool with a limited, right, you can say features, because Git has many other features like merge and all those, right, resolve the conflicts and all that. Here it is not like that. It is just a versioning, right? It is just versioning a file, and therefore you are using it. Now, second feature that is mostly talked about is about encryption, right? Why encryption is important in S3? Security. Yes, obviously, because it is your data, right? You're storing data, and data should be, right, not Secure. easily accessible, right? And in a way, right, if it is hacked, right, it should not be, right, read, right? So I will keep my data, right, whether it is in transit or whether it is in rest, right, it should be encrypted. Now there are several mechanisms to do it. So can you anyone tell me what are the different, right, options that, right, S3 provides in terms of encryption? Client side and server side encryption, I guess. So there are two major part, right? And in client side, how you will do that? So you will have your own, right, key services that you are using, right? आपका खुद का थर्ड पार्टी या आपने कोई, राइट, की मैनेजमेंट यूज किया है. आप क्या कर रहे हो? आप जब डाटा अपलोड करने से पहले आप क्या कर रहे हो? उसको Encrypt. इनक्रिप्ट कर रहे हो, राइट? इनक्रिप्ट करने के बाद क्या कर रहे हो? आप अपलोड कर रहे हो. नाउ जब आप अपलोड कर रहे हो, ऑब्वियसली क्या हो रहा है? ट्रांजिट में है. पहले तो आपने रेस्ट पे उसको इनक्रिप्ट किया अपने मशीन पे, फिर उसके बाद आपने उसको भेजा. तो जब जा रहा है, राइट, S3 पे over internet or using whatever network, so obviously S3 uses what? In transit encryption like TLS, राइट, और SSL इंक्रिप्शन होता ही है आपका. तो ट्रांजिट में भी सेफ रहता है, कोई बीच में मतलब उसको हैक करके आपका डाटा रीड नहीं कर सकता. दैट इज मेंटेन. नाउ योर इनक्रिप्टेड डाटा हैज कम टू, राइट, सर्वर नाउ, राइट, जिस जगह आपने डाला है S3 में. नाउ अब मैं वहां पे उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे उसको डिक्रिप्ट तो करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली मेरा क्लाइंट की कहाँ पे होना चाहिए? वहां पे भी मेरे को पता होना चाहिए कि किस क्लाइंट की से मैं उसको एक्सेस करूंगा. तो मेरा की सर्वर साइड पे भी मुझे यूज करना पड़ेगा, राइट, बट आई एम यूजिंग व्हाट? Client keys. So this is what? Customer specific encryption or customer key, right, encryption. सर्वर साइड में क्या है? सर्वर साइड में एक S3 अपना खुद से देता है, ठीक है. तो उस इंक्रिप्शन उन्होंने जो यूज किया है वैसे AE 256, राइट, AES 256 इंक्रिप्शन है. तो आप वो चूज कर सकते हो. जब भी डाटा आएगा उधर और आपने AES किया तो वो इनक्रिप्ट हो जाएगा किससे? AES 256 इंक्रिप्शन से सर्वर साइड में इनक्रिप्टेड होकर आपका डाटा रहेगा, जो भी डाटा आपने इनेबल किया हुआ. दूसरा, you can use AWS managed services like KMS. So KMS is a key management services given by AWS. And right, while integrating or creating S3 bucket, you can say that my data, whatever in this S3 bucket, should be, right, encrypted using this KMS key that I have created. So वो KMS से उसको क्या करेगा? Encrypt कर देगा. You got my point? Yes. Okay. So these are the several, right, ways of doing, right, encryption, and those options are available. We will create S3 bucket and I will show you. And the very important thing that I'm going to discuss now, right, is basically a life cycle, right, S3 life cycle. Anyone aware of S3 life cycle? Why we need a life cycle? Oh, yes.
Yes. S3 life cycle will be means if we are storing any data in S3 standard, but after some day, if we don't need that data frequently, then we can move that to Glacier or some other infrequent access. Okay. So cost will be less for that. So basically, they can be classified, right, as a standard class, right? There are different storage class called standard class, right? Standard, and then there is an intelligent, right, infrequently access, and then there is, right, region specific, right, intelligent tiering, and then there is, right, Glacier. So there is a reason behind it, right? For example, how frequently you want your object, right? So as per the storage classes, the availability and accessibility, right, percent, or you can say performance is there. For example, if I'm keeping in standard, right, it means, right, I want my right, whatever object very frequently, my application is needing it, so I want, right, around 99% of availability of my data, and accessibility should also be faster. So in such cases, when I will use my application, say for example, a log is getting generated, okay, and you are doing analytics over that logs. So maybe, right, for first 2 weeks you need that log file, right, which is stored in S3, and you are accessing very frequently. So obviously, for 2 week, maybe, right, you would be happy that it should be in standard, so that, right, your availability and that accessibility is faster, right? Now after that, you did intelligent tiring, you need it frequently, and latency should be, right, less. So you made it what, scoped it to specific region, किस region पे रहना चाहिए, so that मेरे को access करने में दिक्कत हो, उसको ढूंढना ना पड़े दूसरे region में जाके, since global है, तो intelligent way of accessing हो गया, तो वो भी एक तरीका है. But मेरा डाटा अब स्टेल होते जा रहा है, 2 वीक के बाद क्या है, वो ओल्ड हो गया डाटा, अब मैं उस पर इतना काम नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे कभी हिस्टोरिकल डाटा तब चाहिए जब मैं उसको करूंगा, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ, मैं अपने चार्जेस भी बचाना चाहता हूँ और एक्सेस भी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? यस उसको कहीं सचिन. मूव कर सकते. We can move that data to the Glacier. Glacier. So Glacier is what? An archival, right? Archiving your data and, right, placing it. Now, when you access, right, from archive, it might be delayed. Your data, right, might take 1 or 2 days per your size, right, to come to you, and then, right, you can do some operation over it. So obviously, availability and accessibility would not be as fast, right, like in intelligent, right, storage classes, which are, right, are main for, right, frequently accessing the data. Is this clear, guys? Yes. So I would say, right, you can do one activity for yourself, write down all those 5 storage classes which are there, right? After reading, write your understanding definition in front of, right, all those storage classes, and then also try to understand how this life cycle be configured for, after how many days I want to move it to Glacier, right? So obviously there's an option where it will say, right, after this many days my data should get into, so you're managing the life cycle, right, of your data there. Okay, so you can also write the configuration involved in it, right, somewhere. So most of the time you will face these questions, right, related to versioning, related to encryption, right, related to the life cycle in S3 generally, right? So if you read about them or memorize them a bit, right, then there is no problem, and they are not difficult to understand. It's very standard thought, right, everyone have. Only thing, some naming specific things should be clear, and you should be aware, right, this is what, for example, if they say, oh, what is the S3 specific encryption, then you say, right, AES 256, this should be remembered, right? So in that way, right, try to read them. Okay, now I will go to my Amazon web service, will log in. Which is X2YWIP. Okay. Now let's go to first S3. Okay, so say I'm going to create a bucket. Okay, so went to this storage service S3, and I am creating here create bucket. It is visible, right? My screen is visible to everyone. Is it? Yes. Yes.
Okay, so I'm creating a bucket, and see if I give a name which is most probably right someone had might have created, right? I went to create a bucket name test, right? And say just click on create bucket. What happened? It says that bucket with the same name already exists, right? So obviously you cannot create right a bucket which is already created, so it should be very unique. Okay, so see it says right bucket name must be unique and must not contain spaces or uppercase letters. So it should start with small right letters. It should start with numbers. But I have read somewhere don't use right start with numbers, and never use your bucket name like an IP. Right, IP name की तरह मत बनो जैसे 1 dot right 92 dot. Never use that. It will create lot of problem. Okay, so this is my suggestion. Right, and there are rules of bucket naming. You can go and read it in there. It will definitely might be written there. Okay, so I am creating some bucket like my test hands. The bucket name end with dash नहीं होता, right? Okay. So my test is hands bucket, and let's see. So I will be able to create. So see bucket is created now. There are few things that I have to talk about right about this bucket. First of all, let's go directly this here, and you can see when I created this bucket, I didn't unchecked, right? I didn't made my right object public. So obviously bucket and objects are not public in case of this, right? My test bucket, which I'm selecting here. So if I want to make it public, I have to right tweak some right configuration, which while creating I didn't. Right? But I can do all those things right, which I didn't do right after right going inside this bucket. In bucket, there is something called properties. In properties, right, you can see this bucket versioning, right, intelligent tiering archive configuration that is right related to life cycle, server access logging, right, AWS, right, CloudTrail data events. If right you want to read using this, these are various right thing that you will see. So for example, if I say versioning, so I added this versioning and enabled it, and I save changes. And when I will put an object out here, right, in this enabled version, right, for example, let me drop an object. Say, for example, I take lab1 aws.txt, open. Okay, so I selected this object from my local system, right, and uploaded it here. Okay, so it says right, it succeeded. My upload of bucket has been done. Let me close it. Now you can see this list version is appearing here because I right enabled here right list versions. So if I want to check my list version, right, I will right enable it list versions, and I can see this version ID right appearing. Right, I can right Deepak, hide. Yeah. can you repeat again? Actually, the screen was stuck because of internet issues Okay. on my So side. okay, I said when you uploaded this bucket, right, since my versioning is enabled, there is a list version right button, or you can say right enable or disable option is there, right, list versions. So this by default would be right hidden or disabled, and when you enable it you can see the version of this particular bucket. Okay, particular object. Now this is the version ID. This now for example if I make change to this particular right lab1.txt and upload it. So let me go to downloads, running AWS. This was the file lab1, right? So let me edit it, and I will write something like ABC here. Okay, and saved it. Control S. I will go to my this. Now I will upload a new file, right? Same file, right? Add files. I will select same lab1 AWS. Open it. Select it. Upload is successful. I will close it. Now you are seeing only one file, right? Let me enable list version.
You can see, right? There are two version files. One is the old one and one right recently, right? And the contents, right, would be maintained, right? The contents would be also maintained. Is it clear? Yes. Okay, perfect. Okay, now let's go back to properties. Deepak, one question. The name is same, right? Obviously name would be same, only the versioning will change. The versions will change, right? The version ID will change. Version ID will be different. Okay. Deepak, one question. Yes, Ashwini. This is Rajat. Yeah. Rajat, okay. Version ID is nothing. Basically, it is a hash code, right? Correct. Okay, got it. Okay, now let's talk about this encryption, and this is what I will not show you with KMS key or all those, but I will show you, these are the options, right? So encryption key type, either you can use S3 key, that is SSE S3, that is AE 256, enabled. Okay, and another is what, using the KMS, AWS key management service, there is a service and you can use that key, so it will ask you the key name and all that, and which bucket key that you want to use. So choose from your KMS master key or ARN. So obviously when you create a KMS key in the KMS service, it will get its an on principal or ARN ID. So either you can choose the KMS direct master key or use the ARN. Both options are used. And where you want to apply this, and AWS managed keys in S3, so you can use S3 one also. So आपने वहाँ पे बनाया एक KMS और S3 में आपने वो रखा हुआ है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। आप ये वाला यूज कर सकते हो, जो आपने मास्टर की वो मास्टर की चूज कर लो। अगर आपने KMS बनाया तो यहाँ पे आएगा, सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हो, तो ऑब्वियसली ये आपको क्या है, AES 256 इंक्रिप्शन पे ले जाएगा। ठीक है, सो these are two options for the server side encryption which is given by you. Customer side encryption, you will manage it, you have to put it and encrypt decrypt your from your side, client पे आपने पहले डाटा encrypt किया, S3 में चला गया वो encrypted way में, फिर जब आप सर्वर पे एक्सेस करोगे तो आपके कस्टमर की से आप उसको डिक्रिप्ट करोगे और चूज करोगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ यस, Clear. थैंक यू। ओके, नाउ गो टू परमिशंस। सो परमिशन में देखो यहाँ पे हमने जो पब्लिक एक्सेस है ब्लॉक किया था, तो परमिशन में जाके हम उसको एडिट कर सकते हैं। इसमें देखो ये अगर मैंने अनचेक किया तो मींस आई एम अलाउइंग माय पब्लिक एक्सेस। नाउ देयर आर सर्टेन things also, in being a public access, something you can restrict, so block public access to buckets and object granted through any access control it। अगर ACL से है तो उनके लिए आपने ब्लॉक किया, तो ये they are specific to their meaning। You while doing some development work or setting up things, you have to go through this options, or else you will make your entire thing public। ठीक है, so block public and cross account access to buckets, तो जो भी क्रॉस अकाउंट एक्सेस के वे में बनाया हुआ बकेट्स है, उन पे आप पब्लिक एक्सेस नहीं दोगे। तो इस तरह के यू कैन से कंस्ट्रेंट्स बोल सकते हो, वो दिए हुए। ठीक है, तो अभी मान लो मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ, तो ये पूछ रहा है बिकॉज यू आर ओपनिंग टू द एंटायर वर्ल्ड, एनी इट्स अ पब्लिक एक्सेस you are giving, so I need to write confirm। okay. Now my bucket has become what, publicly accessible। So if I go to my S3 bucket, I can see now my test ethans bucket has objects can be public। Okay, now I will go inside here। Right now in management, you can define lifecycle rules, okay, and replication rules means replication means what? Anyone? Copy of that file. Obviously, for example, I replicated my one bucket, which is in this region, and I have another bucket, and I enabled replication between these two buckets. So whatever file that I am creating here, or why I'm editing here, will be also replicated in a bucket in, say, maybe another account. So these are replication is required. So why replication would be used? So the reason behind it is, for example, from on-prem,
right? I had only one account, right, which is facing right on prem. उनके बीच में मैंने connectivity दिया हुआ है on prem to, right, and generally shared account बोल सकते हो. तो जब वो डाटा आप डाल रहे हो, आप shared account में डाल रहे हो, वो बंदा अपने रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट अकाउंट में तो डाल नहीं सकता, या राइट प्रोड अकाउंट में. तो शेयर्ड क्या कर रहा है, शेयर्ड ने एक बकेट बनाया मैंने, उसमें आप डंप करने दे रहे हो, और आपने यहाँ पे शेयर्ड वाला जो बकेट है रेप्लिकेट किया हुआ है किसके साथ, जो भी राइट प्रोडक्शन पे है या टेस्ट एनवायरनमेंट में जो बकेट है उसके साथ. तो ऑब्वियसली जो डाटा इधर डाल रहा है वो कहाँ पे दिखेगा, उस अकाउंट पे भी दिखेगा. तो यहाँ पे एप्लीकेशन राइट काम आता है. ठीक है. Deepak, replication means cross region and cross account also both, right? Yes, both cross region and cross account both. You are right. Okay, now create lifecycle rule is the thing that we discussed, right? So obviously, what is your you can give a rule name and apply to your right files, and in this, right, you can define some rule actions. So rule action, right, how you will transition current version object between storage classes. So if you select this, right, it will give you, right, say for your want from transitioning standard IA, right, and after how many days, right, and what transition you want to move, right, after this much transition, whether you want to take to intelligent tiring or you want to take it to glacier. So if you want to take it to glacier, so in glacier, right, how many days, right, a valid integer values. For some, for example, I want it for 356 days, right? So here I want, right, only, right, some weeks or 2 weeks, 15 days, right, whatever. So I can do that. So it will be there, right? So if minimum 30 days required before transitioning to 30 days. तो यहाँ पे अपने को कम से कम ज़्यादा 1 महीने देना पड़ेगा. That was the right configuration. So this is a rule that you have written and can be applied, right, to your objects, right, that you are creating. So these are life cycle rule actions. Okay. So till now, right, I hope you are now aware, right, about S3. Rather, I would just what I have said you, right, learn, right, write a definition of storage class for yourself. So what do you mean by intelligent tiring, right? What is standard, right? What is glacier, right? And other, right, intelligent tiring, infrequent access, right? So these are different, right, storage classes that you will read. So do write about them. It will help you a lot, right, in interviews. Okay. Now, Deepak, one question is there. Vishal, yes. Actually, in life cycle ना अभी जो आपने दिखाया था लाइफ साइकिल में हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह पे हमने 30 days डाला था. It means our data will exist in standard storage up to 30 days, and after 30 days it will automatically move into the glacier, right? Correct. That is the meaning of that. Yeah, and what is 356? It is the number of days. कितने दिन तक रखना चाहते हो ग्लेशियर पे, उसके After बाद भी that, उस पे कुछ, हाँ, okay. उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा वहां से. ठीक है, Yeah, डाटा डिलीट हो जाएगा. ठीक है. Deepak, Yeah. this like life cycle is based on only days parameter, or can we define custom as well, like type of access? So for example, some files are accessed very frequently, so that should not be moved to glacier. So can we do that? I didn't get you, Nikhil. Can you repeat it? Means the life cycle is, implemented in terms of days, number of days, right? Yes, correct. That's true. Yeah, if I want like a couple of the files, like even if they are more than 1 year, but we need it very frequently, so that should not be moved to glacier. So can we configure in such a way based on the Yes. access type? Yes, you can. आप कर सकते हो, आप नंबर ऑफ डेज ज्यादा रख सकते हो उसका. ठीक है, कितने टाइम तक वो इस पे रहे, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड में रहे, राइट, जहाँ पे आपको एक्सेस करना है. No, my question is, instead of number of days, can we define it in terms of other parameters, in terms of other properties of the file? Other properties, when you say what, the क्या, access, like number of time the file got accessed, or see, I think that can be achieved programmatically, right? But not, I think some configuration is not there. So programmatically आप ये कर सकते हो, आप देख रहे हो कि ये फाइल का एक्सेस ज्यादा हो रहा है, तो आप नंबर ऑफ डेज ट्विक कर रहे हो. ठीक है, आगे बढ़ा दे रहे हो. Actually, we can do that via Lambda, but for the life cycle manager rule, only days we can define. That's what I am saying, Sonia. तो मतलब यही मैं बोल रहा हूँ कि programmatically करना पड़ेगा. So programmatically means either Lambda or any program, any way, right? Through which you can, right, want to tweak it, change it, right? कि आप कैसे access कर रहे हो, उसका behavior से, right, आप tweak कर सकते हो.
तो वो Understood. उसके लिए ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, खुद का इंटेलिजेंस नहीं है, राइट, कि S3 खुद समझ रहा है कि ये बहुत बार कर रहा है, तो राइट इट शुड बी फॉल इन दिस स्टोरेज क्लास, राइट, और इन राइट दैट स्टोरेज क्लास। इस तरह का कोई वो नहीं है, मतलब स्मार्टनेस नहीं है, ठीक है। Okay, understood. Understood. ओके, नाउ आई थिंक हम यहाँ पे S3 पे करते हैं, और आज हम राइट एक सर्वरलेस एप्लीकेशन वाला लैब करते हैं, ठीक है। तो उसको पहले मेरे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है वो, किस तरीके से हम राइट एक सर्वरलेस एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो आई विल यूज माय, मैंने जो पहले स्टूडेंट्स को बताया है, मैं वही वाला पेज पे जाता हूँ। सो सी, ये हमारा एक्चुअल आर्किटेक्चर है सर्वरलेस का, ठीक है, और आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे है। तो आई एम यूजिंग सम सर्विसेज लाइक राउट 53, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखा नहीं था उनको एक्सप्लेन करते वक्त, बट आपके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा एक राउट 53 है, दो वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट बिकॉज वी हैव टू पे if we use route 53, but our architecture needs it, demands it, right? अगर मैं इस तरह से कुछ डेवलपमेंट करूंगा सर्वरलेस, तो ऑब्वियसली एक राउट 53 तो पिक्चर में आएगा, क्योंकि मैं एक वेब एप्लीकेशन राइट होस्ट कर रहा हूँ जो कि सर्वरलेस है। ऑब्वियसली राउट 53 इज आल्सो सर्वरलेस, राइट। मैं इसके लिए कोई सर्वर मैनेज करता, यहाँ पे जाके मैं अपना डोमेन क्रिएट करता हूँ, जस्ट लाइक GoDaddy, राइट। और मुझे जो मेरा डोमेन है वो मेरे डोमेन से यूजर एक्सेस करेगा और मेरे सर्विसेज को यूज करेगा। Now my application is hosted in S3, so this is my S3 basically, right? This is S3 in which right my static web page is hosted. So in most of the serverless application, that the starting point would be what, S3 with the static page. After that, right, it will crumb to right different right pages. So ये हमारा S3 है, ठीक है। और मेरा जो कोड है राइट, जो मेरे वेब एप्लीकेशन को डायनेमिक पेज लोडिंग या व्हाट एवर डायनेमिक चेंजेस जो होने चाहिए मेरे पेज पे, राइट, या डेटाबेस से इंटरेक्ट करके कुछ चीज लाना है, उसके लिए जो मैं कंप्यूट यूज कर रहा हूँ, वो कंप्यूट मेरा कौन सा है, लैम्डा है, ठीक है। अब ये लैम्डा राइट अगर मैं यूज कर रहा हूँ मेरे वेब एप्लीकेशन के लिए, तो ऑब्वियसली आई शुड राइट टू रिट्राइव और टू शो यूजर सम राइट डेटा, आई नीड राइट सम right API, or you can say some REST API invocation method, so that it will hit this lambda. So I'm using right a trigger as what, API gateway. Okay. So, I just talked about right some right components that which are serverless, and we are using that. Okay. Now, say this is me or any user. I have my application URL with me. That is the domain that is given to me to access that URL. So when I will hit over my browser as a user, first of all, what will happen? It will try to resolve right where to go using that domain. So it will obviously go to Route 53, and Route 53 right will give me an A record right or IP right through which I will talk right to my actual server, है ना। या तो लोड बैलेंसर का आईपी देगा, या तो मुझे S3 का आईपी देगा, या S3 का मेरे को डोमेन देगा, राइट। तो मैं तो अपना एप्लीकेशन डोमेन कर रहा हूँ, मेरा एप्लीकेशन का नाम है मान लो mypage.com, तो मैंने mypage.com हिट किया, बट मुझे क्या मिला, यहाँ पे मिला your S3 domain.com, तो मुझे यहाँ से रिटर्न मिला a record your S3.com। तो जब ये मिला तो एक्चुअली ये हिट करेगा जाके किसको, S3 को। और S3 में मैंने एक स्टैटिक पेज डाली हुई है, तो स्टैटिक पेज जो ये S3.com ने मुझे दिया एज ए यूजर, मेरे को एक पेज मिल गया, दैट इज राइट माय फर्स्ट पेज और लैंडिंग पेज। जैसे वो लैंडिंग पेज मिला, वहाँ पे मेरे फॉर्म्स हैं, बटन्स हैं, तो मैंने मान लो बटन इन्वोक किया, तो ऑब्वियसली मैं जब बटन इन्वोक कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई रेस्ट एपीआई इन्वोक कर रहा हूँ। जैसे ही वो रेस्ट एपीआई इन्वोक होगा, वो कहाँ जाएगा, एपीआई गेटवे को हिट करेगा। एपीआई गेटवे बोलेगा ओके ये इसको कंप्यूट करने के लिए मुझे राइट किसी फंक्शन को करना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने एपीआई गेटवे को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसको पता चलेगा किस लैम्डा फंक्शन को मुझे हिट करना है, दैट विल हिट दैट लैम्डा फंक्शन, दैट लैम्डा फंक्शन विल कंप्यूट राइट कि क्या रेस्पॉन्स देना है, वो एक रेस्पॉन्स देगा, वो एपीआई गेटवे के थ्रू रेस्ट एपीआई के राइट एज अ रेस्पॉन्स जाएगा, और वो यूजर को वो राइट दिखेगा। नाउ obviously most of the serverless application will demand database, right? So obviously if I need to calculate some right data points, I can integrate right my this compute with what, a DynamoDB, right, a serverless right database। तो obviously मैं RDS या DynamoDB के साथ
कर सकता हूँ। मैं लैम्डा में जब भी कंप्यूट करूंगा, मैं डायनामोडीबी में जाके क्वेरी मार के डाटा ला के वो भी यूजर को दिखा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ इस लैब को। तो मेरा जो सर्वरलेस एप्लीकेशन वुड बी राइट मेनली कंसिस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स. Any caution on this, right? The architecture of flow that we are going to perform. No? Any query, right? In terms of right, say for example, you have to design a serverless application, or you have to move right from your current application to serverless. So what all you need to identify कि कैसे हो सकता है. So obviously you have to somewhere you have to use Route 53, right? Maybe S3 or any right different serverless to host your page. Then API gateway, right? And obviously for authentication also you can use Cognito, right, which is the AWS, right, user federation service. कि एज अ यूजर अगर मैं पेज भी एक्सेस कर रहा हूँ तो पहले मैं ऑथेंटिकेट होना चाहिए कि हाँ भाई ये यूजर राइट एक्टिव डायरेक्टरी में या राइट कॉग्निटो के फेडरेटेड उसमें है कि नहीं है, राइट. कोई तो यूजर आईडी उसको ऑथेंटिकेट सैमल ऑथेंटिकेशन, राइट. ये सब वेरियस एस्पेक्ट आएंगे ऑर्गेनाइजेशन पे. तो यू विल सी दे विल बी फॉलोइंग सेम राइट फ्लो दैट आई एम गिविंग. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस लैब. ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, पहले मैं लैम्डा क्रिएट करूंगा अपना, उसको टेस्ट करूंगा मेरा लैम्डा चल रहा है कि नहीं चल रहा. इट्स अ वेरी सिंपल कोड, कोई डिफिकल्ट कोड नहीं है. फिर मैं अपना एपीआई गेटवे कॉन्फ़िगर करूंगा और एपीआई गेटवे में एक एपीआई गेट एपीआई क्रिएट करूंगा और उस गेट एपीआई को वैलिडेट करूंगा कि हाँ वो जो लैम्डा को हिट होकर रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है. तो मेरा एक राइट गेट एपीआई इन्वोकेशन मिल जाएगा. उसके बाद मैं S3 में जाऊंगा और S3 में अपना बकेट क्रिएट करूंगा और वहाँ पे मैं स्टैटिक पेज डालूंगा. ये स्टैटिक पेज राइट यूजर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है. और वो एक्सेस में मेरे उस HTML जो पेज है उसमें क्या है, कोड है, स्क्रिप्ट है, राइट. HTML में वो स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, वो लैम्डा को इन्वोक करेगा. तो ये चीज हम इस फ्लो में करेंगे. राउट 53 हम नहीं ही यूज कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, पैसे नहीं है कि वहाँ पे अपना डोमेन खरीदे और राइट उसको करे. तो आई एम स्किपिंग दिस डोमेन. आई एम डायरेक्टली वुड बी हिटिंग व्हाट, द S3 URL जो हमें यहाँ से ये राउट 53 से जो मिल रहा था वो डायरेक्टली S3 का राइट पब्लिक URL है क्योंकि हमने एक्सपोज किया हुआ S3 को पब्लिक. तो हम वो वाला बकेट वो जो URL है वो यूज कर लेंगे, ठीक है. सो दिस इज आवर प्लान. So let's go and right create lambda. जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे लैब के आर्टिफैक्ट्स हैं पड़े हुए, मैं आपको शेयर भी करूंगा. If you want to do with me you can do, right, or you can concentrate and later right do right, you can write steps कैसे किया है, right. तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ लैम्डा पे. डू आस्क क्वेश्चंस गाइस, अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है पूछ सकते हो आप, कोई उसमें वो नहीं डाउट है ऐसा लग रहा है. फ्लो में भी कुछ क्वेश्चंस हैं. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन and we will talk about various aspects that we are using right in this function, don't worry about that. So I am writing right my weekend serverless web app. So this is my say function name, right. So my function is a Python code, right. So I will use my runtime as what, Python. Okay, now here a permission I'm using right a specific permission right defined right for right serverless application. So I will tell you why. So I want to give a role name. So say I will use right my morning weekend okay, web app role. मैंने इस नाम से एक रोल बनाया जो भी मेरा. और यहाँ पे मैं पॉलिसी टेम्पलेट जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो देयर इज अ सिंपल माइक्रो सर्विसेज परमिशन. देखो सिंपल माइक्रो सर्विसेज परमिशन मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं सर्वरलेस एप्लीकेशन कर रहा हूँ, हाई चांसेस आई नीड टू यूज राइट डायनामोडीबी, आई नीड स्पेसिफिक परमिशन. और बाकी भी परमिशन ये दे रहा है, जैसे क्लाउड वॉच पे जो भी लॉग जनरेट होगा राइट, तो रीड राइट ऑन क्लाउड वॉच वो भी इसमें है. आई विल शो यू ऑल द परमिशंस राइट. आई एम परमिशन जो हम आई एम में हमने डिस्कस किया था क्या क्या चीजें हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई जनरली राइट
this serverless application uses simple microservice permission और extend this template simple microservice permission को extend करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये डाला और API गेटवे भी इन अ वे राइट DynamoDB यूज करता है इंटरनली। और एडवांस सेटिंग यू नो राइट, एडवांस सेटिंग किस लिए है? अगर मुझे किसी स्पेसिफिक VPC में करना है ना, हमने ये डिस्कस किया था लैम्डा करते वक्त, तो VPC के लिए हमें किसी VPC में नहीं करना, हम डिफॉल्ट VPC पे ही कर रहे हैं। नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। Okay, now I will show you that permission thing first, right? कि configuration यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो परमिशन दिखेगा। हमने एक रोल बनाया, राइट? ये रोल को देखते हैं, रोल में क्या परमिशन है, सो दैट यू विल अवेयर कि ये कुछ नहीं है, सम लिमिटेड सेट ऑफ परमिशन जो चाहिए था वो हमें एक टेम्पलेट से मिल रहा था, वो टेम्पलेट हमने यूज किया। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर इसमें एडिट करना है तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, राइट? इसी में हम पॉलिसी अटैच कर सकते हैं इनलाइन अपने। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे दो मैनेज पॉलिसीज हैं AWS के, ठीक है। एक तो लैम्डा बेसिक एग्जीक्यूशन जो बाय डिफॉल्ट आता है ना, जो हम अगर ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं वो भी आता है। इसमें है क्या देख लेते हैं। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, क्रिएट लॉग ग्रुप, पुट लॉग इवेंट्स, राइट? जो भी लैम्डा हिट होगा तो उसका क्लाउड वॉच लॉग में राइट एक लॉग स्ट्रीम बनेगा और उसके अंदर लॉग इवेंट्स जाएंगे। वो इसके लिए ये लैम्डा बेसिक एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। नाउ सेकंड इज माइक्रो सर्विसेज। इसमें क्या है, डायनामोडीबी के किसी टेबल पे अगर आपको कुछ पुट करना है, गेट करना है, डिलीट करना है, उसको सर्च करके कुछ निकालना है, अपडेट करना है, राइट? तो ये सारे फीचर्स दे रहा है। ऑब्वियसली इन अ केस व्हेन यू विल यूज राइट DynamoDB, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द राइट सर्वलेस एप्लीकेशन यूजेस दिस, राइट? सो ये अभी मैं इसमें कुछ नया पॉलिसी अटैच करना चाहता हूँ तो मैं नया अटैच पॉलिसी करके कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द कोड पार्ट एंड राइट आवर कोड हेयर, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो हमारा कोड आर्टिफैक्ट में हमने यहाँ पे कोड रखा है, जो मैंने ओपन विद टेक्स्ट एडिटर। ये मेरा राइट लैम्डा कोड है और आई विल एक्सप्लेन यू क्या कर रहा है। मैंने इसको कॉपी किया, मैं इतना पार्ट जो फंक्शन का जेसन मेरे को चाहिए, इंपोर्ट जेसन, मैंने इतना कोड रखा। ये कोड क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये एक रेस्पॉन्स फॉर्म कर रहा है और ये रेस्पॉन्स इज वेरी स्पेसिफिक टू राइट फॉर ब्राउजर ना। तो ब्राउजर में हम क्या होता है, हेडर्स भेजते हैं, है ना, और एक बॉडी होता है जो कि यूजर को दिखेगा उसके ब्राउजर पे। तो वो वाला रेस्पॉन्स फॉर्म किया है, जो कि कोई API अगर कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो रिटर्न पे ये रेस्पॉन्स जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने दीपक सिंह लिखा, आई कैन राइट समथिंग एल्स आल्सो, फॉर एग्जांपल आवर सर्वरलेस एप्लीकेशन, एंड ये रिटर्न क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है। और मैंने प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए लिखा है कि ये अपने इन्वोकेशन के टाइम में दिखे कि हम लोग लैम्डा हैंडलर के अंदर गए हैं, राइट? तो मैं जस्ट एग्जीक्यूशन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं इसको डिप्लॉय करूंगा पहले, क्योंकि मैंने चेंजेस किए हैं, ठीक है, और इसको टेस्ट करूंगा लोकली लैम्डा पे रन करके कि इसमें कोई सिंटैक्टिकल एरर है कि नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट एक टेस्ट फॉर्म किया यहाँ पे, इवेंट नेम, और इसको क्रिएट किया। रन करने के लिए करना पड़ता है, नॉट रिक्वायर्ड बट करना पड़ता है, हम इस इवेंट को यूज कर नहीं रहे। तो अभी मैं यहाँ पे टेस्ट रन कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे रिजल्ट में देखो, इसने रेस्पॉन्स दिया है, मतलब रेस्पॉन्स हमें जो हमने डाला है वो पूरा का पूरा आ रहा है। मतलब ब्राउजर पे जब जाएगा तो ब्राउजर वाज एबल टू सी एंड सी, यहाँ पे लैम्डा हैंडलर के अंदर भी गया है। इसका मतलब हमारा कोड जो है राइट लैम्डा स्पेसिफिक लोकली ऐसे चेक किया तो चल रहा है, ठीक है। अभी हमारा आ जाता है इसको API ट्रिगर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, API गेटवे के साथ राइट इंटीग्रेट करने के लिए कि API गेटवे इसको कॉल करेगा, रेदर देन मी कॉलिंग राइट हियर API गेटवे से हम इसको इन्वोक कर पाए सेम चीज को। तो इफ यू गो अबव राइट, देयर इज a add trigger, click here and you will see right lot of type of different triggers that you can use. So I am going to use what, API gateway, हमारा lab API gateway। तो हमने API गेटवे या इस API गेटवे को हम एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमें नया बनाना है, राइट? तो हम लोग क्रिएट एन API करेंगे कि नया बना रहे हैं, ठीक है। और इसको बोलेंगे हमको REST API चाहिए, हम लोग REST API क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? इट्स समथिंग लाइक API डेवलपमेंट यू आर डूइंग नाउ।
सिक्योरिटी हम कौन सा यूज करेंगे, हमने IAM का पॉलिसी यूज किया है, राइट, हम IAM यूज करेंगे सिक्योरिटी, ठीक है। और एडिशनल सेटिंग में योर एनवायरनमेंट, राइट, यू कैन डिफाइन, ये आपका API नेम है और कौन से डिप्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल करंटली वी आर डूइंग डेवलपमेंट, सो मैंने इसका नाम डेव दे दिया डिफॉल्ट की जगह। एंड सी इट इज सेइंग, राइट, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, राइट, ये बोल रहा है कि ये प्लीज ध्यान रखना कि आप जब भी राइट API कॉल कर रहे हो और वेब में जा रहा है तो आपका कोर्स जनरली राइट ब्राउजर साइड पे इनेबल्ड रहता है, और अगर आप ये हेडर पास नहीं कर रहे हो, राइट, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, राइट, हेडर नहीं है आपके रेस्पॉन्स में, तो क्या होगा, आपको ब्राउजर शो नहीं करेगा, ब्राउजर अलाउ नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग को कोर्स इनेबल रखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने, आपने देखा होगा मेरे रेस्पॉन्स में मैंने हेडर में क्रॉस एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन कॉलन स्टार लिखा हुआ है, मतलब सारे अलाउ ओरिजिन को अलाउ करेगा, सो दैट आई डोंट गिव एनी ब्राउजर स्पेसिफिक एरर। तो मैं ये चीज़ है, बाकी इनेबल मैट्रिक एरर लॉगिंग, अगर आपको आपके API के लिए मैट्रिक एरर लॉगिंग जनरेट करना है तो आप उसको चेक कर सकते हो, तो वो आपको शो करेगा, राइट, क्लाउड वॉच लॉग्स पे। बाकी अगर आपको कोई मीडिया टाइप, कोई राइट इमेज अगर कुछ आपको डालना है, राइट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आई डोंट हैव एनी इमेज टू पुट हियर। नाउ आई विल ऐड दिस, तो मैंने अपना API क्रिएट कर रहा हूँ और मेरा API क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा देखो API इस नाम से क्रिएट हो गया, माई वीकेंड, राइट, वीकेंड सर्वरलेस API, वेब API, बट इसको भी मेरे को कॉन्फ़िगर करना है प्रॉपर्ली, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, आई विल गो टू माई API गेटवे सर्विस पेज। अभी हमने लैम्डा किया, लैम्डा के बाद हम लोग API गेटवे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ you can see typically a very good pictorial representation, right, is given, right, for example from your browser, that is your client, okay. So from your client, basically you are invoking a method request, right, and this, right, is called, right, using any method, which is not good, which is very insecure, we will change it. And right, this method request is using integration as a Lambda proxy, so that it will understand which Lambda to call. So Lambda proxy will take you to the this Lambda which we have created, it will invoke that, it will execute itself, and then whatever response, right, will come from integration response as a HTTP method response to the browser client. This is actually what's going to happen. So उसका pictorial representation दिया, but I don't want this any method, तो मैं क्या करूंगा, इस मेथड को डिलीट कर रहा हूँ एक्शन से, तो यहाँ पे एक डिलीट मेथड का ऑप्शन है, मैंने डिलीट किया, और आई विल यूज गेट API ना, गेट रिक्वेस्ट करना है मुझे, तो मैंने इसमें गया, एक्शन में गया, एक्शन में आई विल से क्रिएट मेथड, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑल द राइट API के लिए जो मेथड्स हैं वो मिलते हैं, मैं यहाँ पे गेट चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट करो, यू आर चूजिंग गेट। आफ्टर दैट यू हैव टू डू सम कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सबसे पहले आपका इंटीग्रेशन किसके साथ करना है आपको, लैम्डा के साथ, तो मैंने लैम्डा चूज किया, ठीक है। Then I need this lambda proxy integration because I need to hit lambda, so through lambda proxy integration, ये चेक करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो नहीं जाएगा, तो इसको चेक किया। मेरा lambda रीजन US East 1 पे, मेरा जो रीजन है वही US East 1 है, that is correct, and my function name is what, my weekend, so my dash weekend, right, this one, तो ये आ गया इधर में, मैंने इसको किया, and default time at whatever they set is okay, right, it's right to choose this one, right? No problem in it. Now I am saving this, and it says you are about to give API gateway permission to invoke your lambda function, so you say yes, okay। तो अभी मैं ये रिसोर्सेज पे डेवलपमेंट कर रहा था, अभी मेरा डेवलपमेंट चल रहा था गेट API लिखने का, अभी देखो जैसे मैं इसको ओके करूंगा, अभी ये मेरे को पहले टेस्ट करने का ऑप्शन देगा, क्योंकि मैंने डेवलप किया और मेरा टेस्ट के लिए रेडी हो गया, तो आई कैन टेस्ट इट ऑल्सो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये मैंने राइट कर दिया। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इस API को डिप्लॉय करूंगा, इसमें मेरा डेवलपमेंट खत्म हुआ, राइट, और यहाँ पे टेस्ट करके मैं टेस्ट करके चेक भी कर सकता हूँ, अगर आप टेस्ट करना चाहते तो कर सकते हो। तो ये पूछ रहा है आपको कुछ पैरामीटर पास करना है इस राइट रिक्वेस्ट में, और या सीधा आप टेस्ट क्लिक कर सकते हो, तो ये क्या करेगा, और आपका जो भी लैम्डा इन्वोक जो हुआ है ना उसका रिजल्ट देगा। तो ये देखो एंड पॉइंट रेस्पॉन्स हमने को ये मिला यहाँ पे नीचे में, तो ये टेस्ट रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा डेवलपमेंट और ये सब सक्सेसफुली कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, चल रहा है मेरा ये, है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरा डेवलपमेंट हो गया रिसोर्सेज में, मैं इसको क्या करूँगा, डिप्लॉय करूँगा API को, API एक्शंस में जाके डिप्लॉय API, डिप्लॉय किया, और मैंने कौन सा स्टेज यूज किया था, डेव, मैंने डेव पे जाऊंगा और डेव पे जाके इसको डिप्लॉय कर, तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज से एक मूव हो गया स्टेजेस पे, नाउ राइट आई कैन यूज इट। तो अभी मैं ड्रिल डाउन करूंगा डेव को, और इसके अंदर जो माई वीकेंड के अंदर जो गेट एस पे क्लिक करूंगा, एंड आई विल गेट दिस इनवोक URL,
ठीक है, ये URL में कॉपी कर रहा हूँ, ओके, और इसको मैं ब्राउजर पे हिट करूँगा। ठीक है, ये URL मैंने वहां से कॉपी किया, मैंने हिट किया। ठीक है, तो अभी जेसन मेरा सेट नहीं है, बट रॉ डाटा में आप देखोगे तो मुझे क्या मिल रहा है, आवर सर्वरलेस एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, ये इन्वोक एपीआई मेरे लैम्डा फंक्शन को हिट कर रहा है और उसका रिजल्ट मुझे ब्राउजर पे शो कर रहा है। तो मतलब मेरा एपीआई गेटवे कॉन्फ़िगरेशन भी चल रहा है, मतलब एपीआई में मैंने जो इन्वोक यूआरएल डाला है उसे डाला है। अब ये यूआरएल मुझे कहीं पे कॉन्फ़िगर करना है, कौन से स्टैटिक पेज पे, राइट, जो मैं जब यूजर S3 पे होस्टेड पेज को हिट करेगा तो ये जाना चाहिए। तो मेरा जो होस्टेड पेज है वो एक index.html पेज है जो मैं S3 में अपलोड करूंगा, राइट, बकेट बना के, राइट, पब्लिक एक्सेस को परमिशन दूंगा तो जो एक्टिविटी करेंगे। बट ये यूआरएल मैं यूज करने वाला हूँ कहाँ पे, आई विल शो यू। मेरा एक index.html पेज है यहाँ पे, ठीक है, जो हमें चाहिए होगा। इसको मैं ओपन विथ अदर एप्लीकेशन कर रहा हूँ और एक टेक्स्ट एडिटर पे इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा इंडेक्स डॉट, हाँ, तो ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आप देखोगे एक एचटीएमएल पेज है जिसके अंदर एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट कब कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है, जब ये बटन एक ऑन क्लिक करके बटन है उस पर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक में क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, माई फंक्शन, तो यहाँ पे माई फंक्शन लिखा है उसको कॉल करेगा और ये क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, एक एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा है गेट जो हमने बनाया, राइट। तो यहाँ पे मेरा वो यूआरएल होगा जो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल V। Now you can see right I have configured my invoke URL index.html। तो अभी जब भी मेरे को स्टैटिक पेज मिलेगा उसमें एक बटन मिलेगा, उस बटन में जब भी मैं क्लिक करूंगा तो अब देखोगे यहाँ पे मैंने हेलो में स्पेन लिखा है, राइट, स्पैन आईडी माई डेमो, और इसमें मैंने लिखा है क्लाउड गुरुज। इसका मतलब क्या होगा, ये स्पैन होगा। जैसे ही ये क्लिक होगा मेरे को क्या दिखना चाहिए, क्लाउड गुरुज की जगह क्या दिखना चाहिए, आवर सर्वरलेस एप्लीकेशन, राइट, वो दिखना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट, राइट, डायनेमिक लोडिंग, राइट, इज हैपनिंग। तो यहाँ पे दिखाएगा डॉक्यूमेंट क्या है, get element by id my demo, right, inner.html this dot response text, and write whatever there in my demo, change it to, right, what is the response given by, right, this API. So this is the function, right, this is a code, right, a web application code is written, okay? And this is what, right, it is doing now। इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैंने अपना यूआरएल डाल दिया। अब मैं आऊंगा S3 पे, S3 वाले एक्टिविटी पे। तो मेरा लैम्डा कॉन्फ़िगर हो गया, एपीआई गेटवे हमने वैलिडेट कर लिया, राइट। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ bucket. So I will go to S3 और यहाँ पे मैं एक बकेट क्रिएट करूंगा और इसका नाम रखूंगा मैं माय वीकेंड। ओके, मैंने इस नाम से एक बकेट क्रिएट किया, राइट, ये एसोसिएट किया इस रीजन के साथ, राइट, यूएस स्टोन के साथ, और इसको पब्लिक एक्सेस दिया पूरे बकेट को, यहाँ पहले ही मैंने अनचेक कर दिया। ठीक है, और इसके लिए मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मैंने वो भी कर दिया। ठीक है, and I don't want to enable versioning whatever, right, we discuss, I'm just creating this bucket, मैंने क्रिएट किया। सो मेरा ये बकेट क्रिएट हो गया, माय मॉर्निंग वीकेंड सर्वरलेस वेब ऐप, मैंने इस पे इसके अंदर गया। ठीक है, नाउ आई विल अपलोड माय स्टैटिक पेजेस। ओके, जो भी है मैं अपलोड करूंगा, ऑब्जेक्ट्स मुझे यहाँ डालने हैं तो मैं अपलोड करूंगा और ऐड फाइल्स। तो मेरा ये index.html और error.html, ये दो, अगर मेरे को कुछ इशू आता है तो ऑब्वियसली S3 रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, error.html, वहाँ पे बस इतना लिखा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट, विद द एप्लीकेशन, नथिंग एल्स, राइट। सो इसको मैंने ओपन किया, ये दोनों फाइल, राइट, मेरे अपलोड होंगे, मैंने इनको अपलोड किया। बट रिमेंबर, बकेट पब्लिक है इसका मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी पब्लिक है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को भी पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, सेलेक्ट करो इन दोनों, राइट, अपलोड होने के बाद ये जो भी बकेट में आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट, इनको एक्शन में जाके नीचे में एक मेक पब्लिक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस मेक पब्लिक ऑप्शन को क्लिक करो। ठीक है, नाउ आई विल क्रिएट मेक पब्लिक। सो ये बोल रहा है ये सक्सेसफुली एडिटेड पब्लिक एक्सेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, इसको क्लोज करो। Now this, right, objects are, right, publicly accessible।
तो अभी इतना काम हो गया, लेकिन अभी भी मैंने होस्ट नहीं किया मेरे एप्लीकेशन को। तो होस्ट करने के लिए क्या है, प्रॉपर्टीज में जाना है आपके राइट बकेट के, और नीचे में सबसे जाओगे तो एक ऑप्शन है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। इसको हमें इनेबल करना है और इसमें हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने इनेबल किया इसको। इनेबल करने पे आई एम होस्टिंग अ स्टैटिक राइट वेबसाइट, आई एम नॉट यूजिंग रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली होस्टिंग अ वेबसाइट। इसमें मेरा इंडेक्स एक डॉक्यूमेंट होगा जो स्टार्टिंग राइट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड यहाँ पे मेरा एरर डॉट एचटीएमएल, जो मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको मैंने कॉन्फ़िगर किया। एंड आफ्टर दैट आई विल सेव द चेंजेस, दैट्स ऑल। इट विल गिव मी राइट s3 url सिंस इज अ पब्लिक एक्सेसिबल राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे url मिला राइट। अगर मैं इसको हिट करूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज को खोलेगा। देखो मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज आया, तो यहाँ पे हेलो क्लाउड गुरुज आया और एक क्लिक मी बटन आया right? अभी मैं एक क्लिक मी करूंगा और मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन अगर सही है तो इट शुड राइट trigger this API that we have REST API, GET API, and right the response right which is coming from Lambda should come here, right? So let's click here and we can see right our serverless application has come. It means our right flow is working right, and we have not used any right, or we are not managing any server. First of all, our API gateway or our REST APIs are also managed right by AWS. I'm just creating that API right, get API. It will be get executed somewhere in some resource right, that will be taken care by AWS right. S3 itself is right what, serverless. I'm just uploading my objects right, I'm not managing any server to log in and see my object right. It is just right an S3 service. Similarly Lambda, एंड इफ आई इंटीग्रेट विद सम DynamoDB, अगर मैं DynamoDB के साथ राइट अपने लैम्डा फंक्शन पे क्या करूँ, एक टेबल क्रिएट करूँ। टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें जैसे कोई हिट आए राइट, मैं क्या करूँ, पहले एक डाटा एक टेबल में राइट इंक्रीमेंट करूँ डाटा को राइट, और जब भी रेस्पॉन्स हो तो रेस्पॉन्स में और सर्वरलेस एप्लीकेशन के साथ में वो जो डाटा फेच करके जो भी मैंने अपलोड किया वो दिखा दूँ, तो वो भी दिखा सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो अगर आपको एक्सटेंड करना आप कर सकते हो, लैम्डा में बोटो 3 IP यूज करो राइट। आप ये DynamoDB टेबल क्रिएट करो। टेबल क्रिएट करते हुए की वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है राइट, और आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको बोटो 3 लाइब्रेरी में मिल जाएगा। इफ यू वांट अ स्निपेट ऑफ दैट कोड आई कैन शेयर विथ यू राइट, मतलब मोस्टली हम लोग करना ही पड़ता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो नाउ एनी क्वेश्चन ओवर दिस गाइस? हेलो। So do this right, and basically I would say right, पहले इतना पार्ट करो एंड देन DynamoDB वाले पार्ट पे जाओ। DynamoDB पे क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट इट अगर आपको DynamoDB में करना है। And I can show you my some of my right created code right, which is I'm creating for right CloudWatch dashboard widget creation right, in which I am using for custom metrics DynamoDB. I can show you some snippets of right code also. So Boto 3 use this Dynamo. तो यहाँ पे आपको बना बनाया कोड मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा स्टडी करके आपके हिसाब से राइट इंक्रीमेंट के लिए किस तरह से टेबल स्ट्रक्चर है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल होगा, सी दिस वन क्रिएट टेबल, ठीक है। तो पहले आप जब भी आपका राइट कॉल आएगा तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद आप टेबल एग्जिस्ट करता है उसके लिए एक चेक लिख सकते हैं राइट, ये टेबल एग्जिस्ट और नॉट। अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं है तो टेबल क्रिएट करो, इस तरह की लॉजिकल चीजें। तो इसमें आपको दो चीज देनी पड़ती हैं, एट्रीब्यूट डेफिनेशन आप कौन सा टेबल बनाना चाहते हो, और की स्कीमा, दीज आर मैंडेटरी। बाकी लोकल सेकेंडरी इंडेक्स, ग्लोबल सेकेंडरी, ये सब नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है। टैग्स वैग्स भी नहीं डालोगे तो चलेगा, बट ये दो चीजें चाहिए होती है। आपका एट्रीब्यूट डेफिनेशन राइट, जो कि हैश या रेंज में होता है राइट, इसका की स्कीमा तो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने आईडी डाला राइट, आईडी आपका मेन की है डायनामोडीबी में, और उसके अंदर आप क्या तो रो स्पेसिफिक किया तो वैल्यू एंटर करते हैं, नए आईडी के लिए नया रो बनेगा, और उसके अंदर आप काउंटर डाल सकते हो। आपका काउंटर एक कॉलम बनाया राइट जो कि उसका है, और वो इंक्रीमेंट कर रहे हो एवरी हिट, और वो ही फेच कर रहे हो राइट यूजिंग गेट फंक्शन राइट। ऊपर में उसका गेट जैसे क्रिएट है वैसे पुट है और गेट है, या वो पुट गेट यूज करके आप लिख सकते हो। So these are all right very specific to right AWS development, serverless application develop करते वक्त ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो, and they are very interesting if you right get into them. So
या यहाँ पे आप देखोगे तो गेट आइटम है, राइट, और सिमिलरली गेट की तरफ पुट आइटम भी होगा, ये रहा पुट आइटम है। तो ये दो चीजों का यूज करके आप, राइट, इसी एप्लीकेशन जो आप लैब कर रहे हो उसी में इंटीग्रेट करके आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो यूजिंग अ डेटाबेस आल्सो। दीपक, a question here. प्लीज आस्क। वो अपन ने जो इंडेक्स और एरर HTML कॉन्फ़िगर किया है एज अ स्टैटिक वेब पेज, राइट, S3 में। यस अगर सब वो अपने रूट फोल्डर में था, अपन ने जो S3 बनाया था उसके रूट फोल्डर में वो दो HTML पेजेस अपन ने रखे थे, राइट। करेक्ट करेक्ट यस। अगर सपोज वो किसी इनसाइड फोल्डर इनसाइड फोल्डर मतलब कोई और लोकेशन में रहते तो उसका पाथ भी देना पड़ेगा क्या वो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे? बिल्कुल, आप जब मान लो कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो और नोड जेएस और ये सब यूज कर रहे हो, है ना, तो आपका एक होता है स्टार्टिंग होता है ना, कहीं से एक पेज से स्टार्ट होता है ना, उसका ब्रेड क्रम्बिंग होता है, देन इट विल कैस्केड टू वाइट डिफरेंट कीज, है ना। सब फोल्डर के अंदर आपका कोई जेएस होगा, है ना, तो आप वो रेफरेंस मेन कोड पे ही दोगे कि इस जगह से इस S3 के बकेट से उसको एक्सेस करो। नहीं, माय क्वेश्चन इज जो S3 में अपन ने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे दो एरर HTML और एरर करके दिया था, राइट, स्टैटिक वेब पेज में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां पे पाथ भी देना पड़ेगा क्या अपने को? हाँ, अगर आप दे सकते हो, अगर आपका की बेसिकली राइट पॉइंट करता है किसी फोल्डर के अंदर है तो आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, डाल सकते हो। आप कुछ एग्जांपल लेके बता सकते हैं क्या? मतलब मुझे इमेजिन करने में थोड़ा डिफिकल्टी जा रही है। इमेजिन ऐसे कर सकते हो, आप एडिट करो, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई द होम और डिफॉल्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर मान लो मेरा कोई फोल्डर है और उसके अंदर इंडेक्स डॉट है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर स्लैश इंडेक्स डॉट HTML डाल सकता हूँ। ओके, गॉट इट? ओके, अंडरस्टूड। एनीथिंग एल्स? दीपक, हमने जो संडे को प्रैक्टिकल किया था वो यही लैम्डा सेम का? है ना? नहीं, लैम्डा जो संडे को किया था लैम्डा था, EC2 वो बोटो EC2 हमने उसमें EC2 रिलेटेड एग्जांपल लेके किया था, सेम मैंने अभी आपको बोटो का दिखाया, राइट। तो राइट। आप वो सब चीजें कर सकते हो, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, राइट, एंड विल गिव यू राइट मोर इंटरेस्ट। अगर मैं आपको जो पाइथन बताऊंगा, पाइथन का जो मैं दूंगा, राइट, आफ्टर गेट, तो दैट विल आल्सो ऐड वैल्यू टू यू एंड इट यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट यूजिंग बोटो लाइब्रेरी एट दैट टाइम, ठीक है। सो ये कोड्स जो है आप अपलोड कर दोगे क्या, सो दैट वी कैन हाँ, प्रैक्टिस? ऑब्वियसली मैं ये पूरा फोल्डर करूंगा ना AWS का, जिसमें सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, मैं ये करूंगा और ये वीडियो दोनों ही अपलोड मारूंगा, ठीक है। तो जरूर करना है इसको। लास्ट संडे का अपलोड नहीं किया आपने, सिर्फ सैटरडे का किया है? नहीं, मैंने किया है, संडे का भी अपलोड किया है। यही हुआ शायद, मुझे भी विजिबल। रुको एक बार, कैसे नहीं, संडे का नहीं हुआ ऐसे कैसे? हमने लैम्डा ही किया था ना? हाँ, ये देखो ना, लैम्डा है ना, गो थ्रू वीडियो ऑन AWS लैम्डा। दैट इज फॉर सैटरडेज। सैटरडेज, यस। संडे को फिर हमने क्या किया था? ये सेम ही किया था शायद। EC2 का किया था हमने। रुको एक बार देख ले दो, मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ। लैम्डा अगर एक्सटेंड हुआ तो एक ही वीडियो में है क्या? वेरी ऑड टू सी सेम हमने यही वॉइस। किया था कि बटन पे क्लिक करो तो आई मीन API के ट्रिगर होके वो अलग पेज आएगा। तो हमने ये लैब कर लिया था क्या? तो फिर ठीक है। संडे को शायद सर्वरलेस वाला किया था EC2 के साथ। EC2 के साथ नहीं किया था हमने ये लैम्डा के साथ किया था, लैम्डा के साथ किया था, ये किया था, देखो मैंने ये वाला ये यही वीडियो है, ठीक है। एंड जो मैंने हाउ टू अपलोड किया क्रिएट सर्वरलेस पेज। तो ये हमने किया था लैम्डा। अगर सिर्फ लैम्डा किया था, अगर मैंने संडे को आपको ये सर्वरलेस एप्लीकेशन वाला किया था, S3 और ये दोनों किया था, तो फिर मैंने रिपीट किया आज का सेशन। आई वुड से दैट। हाँ, क्योंकि मेरे सारे नोट्स मैच कर रहे थे। ओके, आज के उससे तो फिर हमारा आज पूरा सेशन रिपीट हुआ है, किसी ने रोका नहीं मुझे। तो मेरे तो मल्टीपल लेक्चर्स चलते हैं, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी मेरे 3 बैचेस जो चल रहे हैं ना, उन सब का लगभग सेम टॉपिक ही चल रहा है।
लगभग। इसलिए आपने मैं पढ़ने के लिए फिजिकल डायरेक्टरी, रिमोट रिपोजिटरी, गिट हाँ ये सब बोला बोला था, था। तो अभी Yes. देखो आज मुझे गिट स्टार्ट करना था, तो हम्म, आई थिंक विशाल ने इसीलिए पॉइंट किया था। विशाल का पहला क्वेश्चन यही था एंड राइट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। चलो कोई नहीं, अच्छा है हमने रिपीट किया और थोड़ा सा स्टेलर वे में समझा चीज़ों को, ठीक है। okay. चलो गुड है, तो कल हम लोग गिट करेंगे गाइस। तो गिट गिट में अगर आपने थोड़ा बहुत राइट पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इट इज गोइंग टू राइट आई विल गिव यू सम ग्लैंस राइट। सो जो मैं भी एक पैच का ले रहा था, और लेट मी शो यू कहाँ गया हमारा अनटाइटल्ड डायग्राम। सी दिस इज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर इस पे आपको कुछ राइट पहले तो हम ये समझेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। गिटहब एसपीएन सर्वर, इनके बीच में डिस्कस करेंगे, and you are going to understand right this all flow right from physical to local repo, right? What are this untracked tracking, staging, right? And what is remote repo, right? This all stuff right we are going to do and practically understand also. तो थोड़ा पढ़ो इसके बारे में, right? तो conceptual understanding is very important, क्योंकि अगर आपको एक बार वो समझ में आ गया तो फिर राइट यू विल नेवर हेजिटेट कि भाई गिट तो ऐसे ही है, ऐसा सोचोगे आप, क्योंकि इसमें यही सब चीज़ें रहती हैं, तो उस तरह का एटीट्यूड हो जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद राइट आस्क क्वेश्चंस राइट व्हेन आई एम गिविंग यू राइट नॉलेज, पासिंग द नॉलेज, ठीक है। ओके गाइस देन थैंक यू। Thank But you. Thank you. but I will Thank you, Deepak. then I will share this right lab and today itself, so no हाँ, more confusion. Yeah. yes. Okay. Chalo. Okay. Okay, thanks. Okay. Bye. 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 Bye everyone.